we'll do a simple but tricky example on complex number. If 1 plus I whole to the power 400 equals to x plus iy, x plus iy, this is a standard form of complex number. ये तो आपको पता है अभी तक, राइट? तो x और y का वैल्यू क्या है? x और y कंडीशन जो है दोनों ही सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, r मींस रियल, x एंड y दोनों ही सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका हिसाब से जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस आई टू द पावर 400, इसको भी उसका हिसाब से एक्सप्रेस करना पड़ेगा. देन यू विल कंपेयर द रियल पार्ट बोथ साइड एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, राइट? सो नाउ हाउ विल ब्रेक दिस 1 प्लस आई होल टू द पावर 400? दैट इज द ट्रिकी पार्ट ओनली. 1 plus I whole to the power 400 means what we can write down 1 plus I whole square whole to the power 200, isn't it? ठीक है ना? So क्यों ये 1 plus I whole square किया है? Because then when we will break it 1 a plus b whole square फॉर्म में जब आएगा तब I square आ जाएगा. मेरे को जब भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम देगा then you need to see how you can bring I square into picture, right? So it will be 1 plus 2i plus I square whole to the power 200, that is equals to 1 plus 2i, I square means minus 1 whole to the power 200, that is equals to this 1 and 1 that will be cancelled. ठीक है ना? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तब क्या होगा? 2i whole to the power 200. उसका मतलब क्या है? 2i whole to the power 200 means as I said I to the power 200. I to the power 200 means कैसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसको? 2 to the power 200 into I square. कैसा बोला था मैंने? मेरा लेक्चर सेशन जो है उसका लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, नहीं तो फेसबुक में कमेंट्स में आ जाएगा. ठीक है ना? सो I square whole to the power 100. Then I square means minus 1 whole to the power 100. This 100 is actually the even number. That means minus 1 whole to the power 100 means that will be plus 1, right? So 2 to the power 200. That is what? 1 plus I whole to the power 400. Now what you need to do? This one you need to express or compare with x plus iy. So x plus iy, that is equals to 1 plus I whole to the power 400, that is equals to 2 to the power 200. That is what equals to what you can write down 2 to the power 200 plus I into 0. That means now you can compare between the real part x, that is equals to 2 to the power 200. We mean imaginary part is y, that is equals to 0. That means क्या होगा? x equals to 2 to the power 200 and y equals to 0. So that is what your answer. X equals to 200 and y equals to 0. Got it? Very simple. Only this part is the tricky one. 1 plus I whole square whole to the power 200. Simple problem but tricky. ठीक है ना?